हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मैं हूं संगति एंड आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग? आई होप बहुत बढ़िया होंगे सब, है ना? एंड मेरी तरफ से मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। ओके, let's start today's session without any further delay. In the last class, we discussed about the male and female reproductive system, and we also discussed the journey of the sperm. है ना? Sperm कहाँ से start होता है और कहाँ तक जाता है और उसके बाद क्या-क्या events होते हैं, ये हमने briefly हमने जाना था, right? और हमने ये भी देखा था, we discussed about the fertilization event. Okay? तो अभी हम आज की क्लास में क्या जानेंगे? आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। प्लीज कंप्लीट डू वॉच द कंप्लीट वीडियो। ओके, तो आज की क्लास में हम जानेंगे कि बेबी को वुम में फूड एंड ऑक्सीजन कैसे मिलता है। आपके मन में भी ये सवाल आते होंगे कि वो खाना कैसे खाता है बेबी, है ना? एंड उसका एक्सक्रीटरी वेस्ट कैसे रिमूव होता है। ओके, सो आई वांट टू शो यू अ स्मॉल वीडियो टू एक्सप्लेन दिस। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को बहुत ध्यान से जरूर देखना। It's true. Now that you're pregnant, you're eating for two. But how does your baby get the nourishment? As you eat, your food descends through your esophagus into your stomach, and then intestines, where it's digested, broken down into glucose, fats, and protein. Through digestion, these elements are absorbed into your blood and passed through the placenta. The placenta is a very efficient filter. It rejects many, but not all, harmful elements, such as bacteria. Smaller elements, oxygen, glucose, fats, proteins, vitamins, and minerals, can pass through the placenta. After they've entered the placenta, these elements are passed on to the baby through the umbilical cord. All right, so such a nice video. So here you can see that जो mother when mother is taking the nutritions, so those nutritions are absorbed into the blood, right? Now those blood is moving towards the uterus, okay? And यहाँ पे एक small barrier होता है, that you can see the placenta. Okay, so placenta is there. Now placenta is embedded in the uterine wall and it contains villi on the embryo side. Embryo side में यहाँ पे छोटे छोटे villi होते हैं, which is further increasing the surface area, and mother side में पूरा blood space होता है। ठीक है, तो वहां से blood आता है और यहाँ से nutritions जो है वो diffusion हो जाते हैं। Okay, so villi is providing the large surface area for the glucose, oxygen, and those are moving towards the baby by the process of diffusion. ठीक है, mother से embryo में वो चला आता है. So that's how the embryo is absorbing the nutrition and the oxygen from the mother's blood. ना इसका जो वेस्ट है वो कैसे रिमूव होगा? वो भी सेम प्रोसेस से ही रिमूव हो जाएगा, बट थोड़ा उल्टा हो जाएगा। जो इसका जो बेबी का वेस्ट है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है? ना प्लेसेंटा से ये मदर्स के ब्लड में चला जाएगा। ठीक है, तो मदर्स के ब्लड में जाके व्हेन मदर का जो ब्लड है वो प्यूरिफाई होगा, जैसे आप लोगों ने लाइफ प्रोसेस चैप्टर में पढ़ा है कि मदर का ब्लड किडनी में जाके फिल्ट्रेशन हो रहा है ब्लड का, तो वहां से फिर वो रिमूव हो जाएंगे जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट है बेबी के। ठीक है, सो the waste products generated by embryo can be removed by transferring them into the mother's blood through the placenta. ठीक है, so that's how the embryo is getting nourishment. Now ये जो एम्ब्रियो है, जैसे हमने डिस्कस किया, एम्ब्रियो इट डेवलप्स इनटू द फीटस, देन इट डेवलप्स इनटू द बेबी, राइट? एंड ये जो पूरा प्रोसेस है, इट टेक्स 9 months, एंड दिस इज कॉल्ड एज द gestation पीरियड. सो व्हाट आर द स्टेजेस इन द ह्यूमन प्रेगनेंसी, और ये एम्ब्रियो जो है ये डेवलप कैसे कैसे होता है, कब क्या चीज डेवलप होती है? लेट्स सी, यहाँ पे आप एक छोटा सा डायग्राम देख सकते हो, है ना? 1 month में इतना छोटू सा है, फिर 2 month में थोड़ा सा बड़ा है, ये अभी भी एम्ब्रियोनिक स्टेज में है। 3 months में सी, ठीक है, देन 4 5 देन 6 7 8 9 months में पूरा मेच्योर बेबी हो जाता है। ओके, सो लेट्स डिस्कस दिस विद द हेल्प ऑफ अ शॉर्ट वीडियो अगेन। This is the blueprint for a whole new, unique person that instantly determines gender, hair color, and many other characteristics. The combined sperm and egg is called a zygote. It is the earliest developmental stage. It divides rapidly in the days following fertilization.
The zygote then travels down the fallopian tube to the uterus. After fertilization, the zygote continues to divide and morph into a blastocyst ball of 16 cells, approximately 5 to 6 days after fertilization. It is smaller than the tip of a ballpoint pen. Only 20% to 30% of fertilized eggs will reach the blastocyst stage. Embryos that survive this stage of development have a high implantation potential once transferred into the uterine cavity. The blastocyst hatches out of its shell and burrow into the uterine wall, endometrium, which serves as the source of oxygen and nutrients. About 4 weeks from the beginning of the last period, near the next period, the blastocyst has begun to produce the pregnancy hormone to tell your ovaries to stop releasing eggs. From then on, the menstrual cycle pauses. The blastocyst is called an embryo now. Home pregnancy test might be able to get a positive result. At week 5, the circulatory system, brain, and spinal cord are beginning to form, and the tiny heart will start to beat. The baby's heart beats about 54 million times before birth. The placenta provides oxygen and nutrients to the growing baby and removes waste products from the baby's blood via the umbilical cord. The nose, mouth, and ears are starting to shape at week 6. At weeks 7 and 8, the embryo has doubled in size since last week's. Little hands and feet start to grow. At week 9 to 12 of pregnancy, the embryo is called a fetus. The baby is almost fully formed and has completed the most critical portions. The facial features are more recognizable. The fetus's head is rotated and bent towards the chest, and he can occasionally touch his face. The diaphragm muscles start to grow. The reproductive, circulatory, and urinary systems are all at an advanced stage of development. The fetus will urinate in the amniotic sac. It is a sign of the proper functioning of the fetus's body. If the baby is a girl, her ovaries contain millions of eggs. If the fetus is a boy, his testicles will already start producing testosterone, male sex hormone, which is necessary for the development of his reproductive system. She or he is about 5 centimeters in size and 14 grams in weight. She or he is growing and maturing until ready to birth. Wow, so that's a very beautiful video. So you can see over here कि first जब से pregnancy होती है तो क्या होता है, first 2 weeks में सिर्फ जो है ovulation हुआ, it may happens about the 2 weeks and it can last, okay, and then fertilization हुआ 3 weeks में जब pregnancy start हुई, okay. After 3 weeks, after you last the period, your baby is a tiny ball, all right, और वो फिर डेवलप हुआ, ठीक है. 4 weeks प्रेग्नेंट में क्या होता है, एट 4 weeks योर बेबी इज एन एम्ब्रायोनिक स्टेज, ठीक है. उसके बाद फिर 5 weeks में थोड़ा थोड़ा ग्रो होने लगता है, ऑलराइट. तो ये थोड़ा थोड़ा ऐसे ग्रो होता रहता है. 9 weeks में जाके ये सब ऑर्गन्स थोड़े बहुत डेवलप होने लगेंगे, ठीक है. 10 weeks में बेबी हैज फिनिश द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट, ऑलराइट. 11 weeks में बेबी इज बिजी इन किकिंग एंड स्ट्रेचिंग, इट कैन किक एंड स्ट्रेच, ठीक है. इससे पहले 7th weeks में देखो आईज आ जाते हैं, नोज आ जाता है, माउथ, इट इट स्टार्ट्स टू टेक द शेप. ऐसा नहीं कि पूरा आईज आ गया, जस्ट इट हैज जस्ट स्टार्ट टू टेक द शेप, आईज, नोज, माउथ, ओके. फिर 12 weeks में यू कैन सी बेबी कैन कर्ल,
वो मूव कर सकता है, टाइनी थोड़े बहुत टोज आ गए। ओके, ना ये वाला जो स्टेज है जिसमें लिम्स डेवलप हो रहे हैं, इसको हम बोलते हैं फीटल स्टेज। और उससे पहले वाला ये वाला जो स्टेज था, दैट वाज द एम्ब्रायोनिक स्टेज, मतलब ऑलमोस्ट 2 मंथ्स का एम्ब्रायोनिक स्टेज होता है। ठीक है, 8 वीक तक। ओके, फिर जब लिम्स डेवलप होने लग गए, देन वी कॉल इट एज अ फीटल स्टेज। ओके, फिर 13 मंथ्स प्रेग्नेंट में, it is the last like last week of the first trimester, your baby is now, it is have showing the fingerprints also, fingerprints develop हो जाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे, उसके बाद आता है क्या, सेकेंड ट्राइमेस्टर। फिर जो थर्ड ट्राइमेस्टर है वहां पे देखो क्या हो रहा है। जैसे 29 वीक प्रेगनेंस में बेबी के मसल्स and the lungs are maturing, okay, head is also growing, okay, then 30 weeks pregnant में baby is now almost 3 pounds, 3 pounds का weight हो गया है। Okay, so that's how it is growing, you can see over here। 34 weeks में baby's central nervous system and lungs are maturing, all right, and at the end 39 weeks में baby is fully, and it is like it is waiting to come out of the world। Okay, it is waiting to come out in the world, it is waiting to see the world। ठीक है, तो ऐसा पूरा प्रेगनेंसी का प्रोसेस होता है, और हर एक वीक में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होता है। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू ना। कुछ बेबीज होते हैं जो प्री मेच्योर बेबीज होते हैं, मींस जो 7th मंथ में पैदा हो जाते हैं, तो उनको फिर स्पेशली एक स्पेशल केयर में रखा जाता है, स्पेशल चेम्बर में, जहाँ पे वो फिर कंप्लीटली ग्रो होते हैं, आर्टिफिशियल चेम्बर में रखा जाता है। ओके, सो दैट मीन्स ग्रो तो होना ही है, अगर 7th मंथ में आ गए या फिर 6 मंथ में भी पैदा हो गए, तो फिर उनको फिर आर्टिफिशियल चेम्बर में रख के वैसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करके ग्रो करवाया जाएगा। All right, but the thing is that question is that how the baby comes out of the body। बेबी जो है वो बॉडी से बाहर कैसे आएगा। ठीक है, अब ये एक प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं पार्टुरेशन। पार्टुरेशन इज द प्रोसेस ऑफ द गिविंग बर्थ ऑफ द चाइल्ड, एंड ये नॉट ओनली इन ह्यूमंस, सारे मैमल्स में ही होता है ये। इसमें बेसिकली होगा क्या, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है मसल्स का। तो सर्विक्स के जो मसल्स है वो डायलेट हो जाएंगे, इट बिगिंस टू वाइडन अप, रिलैक्स हो जाएंगे बेसिकली, और ये फैल जाएंगे पूरे। उससे उसके बाद जब स्पेस बन जाएगा, जब सर्विक्स के मसल फैल जाएंगे, डायलेट हो जाएंगे, द बेबी इज मूविंग टूवर्ड्स द बर्थ कैनाल। ठीक है, तो वो वेजाइना की तरफ, उधर से यूटरस से वेजाइना की तरफ वो पुश होगा और मूव होगा, एंड देन द बेबी एक्सपल्शन ऑफ द बेबी, बेबी इज टेकिंग बर्थ। तो फर्स्ट नॉर्मल कंडीशन में हेड बाहर आता है, उसके बाद बॉडी के पार्ट्स बाहर आते हैं, दैट इज इन द नॉर्मल कंडीशन। कभी कभार ऐसा भी अब नॉर्मल कंडीशन भी होता है कि सर उल्टा घूम गया, तो उस केस में सर्जरी करनी पड़ती है। ठीक है, देन डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा, देन प्लेसेंटा आल्सो कम्स आउट from the body। Okay, so let's see a very small video to explain this। Okay, so such a nice video। So you can see here कि जो baby is connected to the mother's body with the help of a umbilical cord। ठीक है, umbilical cord से वो connected था ना। दिस umbilical cord जो है उसको बाद में कट कर लिया जाता है। ओके ना,
This umbilical cord contains the stem cells. What are the stem cells? Stem cells are a special kind of cells which can grow into different organs or anything. ओके, उसमें टोटिपोटेंसी की कैपेसिटी कैपेबिलिटी होती है, तो वो उससे हम कोई भी चीज बना सकते हैं। तो अगर उस अम्बिलिकल कॉर्ड को स्टोर कर लिया जाए बेबी के पेरेंट्स के द्वारा, सो इफ द बेबीज पेरेंट्स आर स्टोरिंग दैट अम्बिलिकल कॉर्ड, तो इन फ्यूचर अगर कभी भी बेबी को कोई डेंजरस डिजीज होता है, फॉर एग्जांपल थैलेसीमिया या फिर एनी अदर काइंड ऑफ डिजीज, और या फिर ऑर्गन रिप्लेसमेंट की बात आती है, सो दो स्टेम सेल्स कैन बी used to cure that disease. Okay, so even उस stem cell से आजकल तो technologies भी है, we can develop the organ particularly using that stem cells. ठीक है, so that also can be done. Okay, so that is the process of parturition. तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा। फर्टिलाइजेशन होगा तो इम्प्लांटेशन होगा, देन एम्ब्रियोनिक स्टेज से फीटल स्टेज, देन बेबी में ग्रोथ होगा, है ना, प्रेगनेंसी होगी, जेस्टेशन पीरियड होगा, देन पार्टुरेशन होगा। तो अभी तक हमने ये सारी चीजें पढ़ी है। बट बट अगर फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ तो क्या होगा? इफ देयर इज नो फर्टिलाइजेशन देन व्हाट विल हैपन? कभी सोचा क्या होगा अगर फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ तो देखो, अगर फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होगा जिसको कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। ओके, सो लेट्स वॉच दिस स्मॉल वीडियो अगेन। Menstruation, also called having a period. As girls get older and their bodies change, they get their periods. The uterus is the part inside the body where a baby grows when a woman is pregnant. The inner lining of the uterus supports and nourishes the developing baby. If there is no baby, the lining is shed during her period. During a period, blood and other tissue from the uterus leave the body through the vagina. A period can last from a few days to about a week. You may have heard doctors talk about the menstrual cycle. This is the time from one period to another, usually about 28 days. Day 1 of the menstrual cycle is the first day of a period. The uterus starts to shed its lining. As soon as the period ends, the uterus prepares again to receive a fertilized egg. Eggs are released from a woman's ovaries. Eggs are super tiny, 1/10 the size of a poppy seed. Women have 2 ovaries, one on each side. The fallopian tubes lead from each ovary to the uterus. In the middle of the menstrual cycle, an ovary releases an egg. After ovulation, the egg travels down the fallopian tube. It takes a few days to complete the journey. Meanwhile, the lining of the uterus gradually gets thicker so it can support the development of a fertilized egg. If the egg gets fertilized, it will implant in the uterus and the woman is pregnant. If the egg is not fertilized, the woman is not pregnant and the egg will begin to dissolve. Because the woman is not pregnant, the lining of the uterus is not needed. A woman will have her monthly period, and the cycle begins again. All right, so nice explanation, nice video. So you can see, I hope you have understood this. So where if there is no fertilization, of course the woman is not pregnant, right? तो क्या होगा? तो for the implantation, the endometrium wall, you can see this wall, this is the endometrium wall, it prepares itself. ठीक है, जैसे आप लोग अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हो ना, है ना, कि कभी भी कोई क्लास टेस्ट हो जाए तो हमें प्रिपेयर होना चाहिए, राइट? तो वैसे ही ये हमारा जो यूट्रस है, इट ऑल्सो प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर द एग्जाम, और यू कैन से फॉर द इम्प्लांटेशन। ओके, तो ये जो एंडोमेट्रियम वॉल है, इट प्रिपेयर्स इटसेल्फ and it becomes rich in blood vessels, okay, and the mucus also, so that implantation can takes place over here. बट अगर फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ तो क्या होता है? ये जो एंडोमेट्रियम वॉल है जिसने इतनी प्रिपरेशन तैयारी की थी, अब ये शट डाउन हो जाता है। ओके, इट ब्रेक्स डाउन, यू कैन से, अलोंग विद द ओवम, अनफर्टिलाइज्ड एग्स, और ये बाहर आ जाता है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस।
ओके, सो देयर इज अ 28 डे साइकिल्स, ये हर 28 डेज में होता है ऑन एन लाइक इन अ नॉर्मल कंडीशन, सो इसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोलते हैं. So here you can see 5 days का होता है. Okay, for it can vary from individual to individual. 3 to 7 days mainly माना जाता है. All right. तो on हम average में 5 days का मान के चलते हैं. तो menstruation हो रहा है. Menstruation होने के बाद फिर क्या होता है? फिर से ovary will start producing the egg again. है ना? तो इसको हम बोलते हैं follicular phase. तो बेसिकली इसमें जैसे जो ओवम है जो कि एक फॉलिकल के रूप में है जिसको हम प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं. प्राइमरी फॉलिकल विल डेवलप इनटू अ सेकेंडरी फॉलिकल, देन इनटू अ टर्शियरी फॉलिकल, देन इनटू अ ग्राफियन फॉलिकल. तो उसके बाद ये पूरा सेकेंडरी oocyte बन जाता है जिसको हम ओवम बोलेंगे. ठीक है, तो ये पूरा फॉलिकुलर फेज था. उसके बाद जब ये पूरा बन गया, अब क्या होगा? ओव्यूलेशन होगा. राइट. सो ओवम, द रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड एज द ओव्यूलेशन. क्लियर है? तो 12 to 16 तक ये ओव्यूलेशन हो सकता है कभी भी, मेनली 14 डेज पे होता है. ओके. उसके बाद ओवरी स्टेज देयर फॉर लाइक 48 आवर्स के लिए ओवरी रहता है. उसके बाद इट लाइक इट डीजेनरेट्स, फिर मतलब वो बाहर आ जाएगा. इसके बाद जब स्पर्म नहीं आया, ओके, स्पर्म नहीं आया, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, सो देयर विल बी द लूटेल फेज. यू कैन सी ओवर हियर जो कॉर्पस ल्यूटियम है, इट स्टार्ट्स टू डीजनरेट्स नाउ. All right, and finally ये बाहर आ जाएगा by the process of menstruation, and this cycle will repeat again. Okay, now there are some hormonal changes which occurs in the female's body. Let's see this. तो basically यहाँ पे देखो, um, pituitary gland is secreting the FSH, means follicle stimulating hormone, and LH means luteinizing hormone. Okay, follicle stimulating hormone, it is stimulating the growth in the ovaries. जो हमने ये पढ़ा ना, follicular phase जो था. Okay, follicular phase ये हमने पढ़ा. So FSH is stimulating this growth in the follicular phase in the ovaries. Okay, and it is also stimulating the estrogen secretion. Estrogen is also the hormone which ovary is secreting. Ovary secretes estrogen and progesterone. तो estrogen secretion को भी ये initiate करता है. ठीक है. LH, luteinizing hormone, ये क्या करता है? Surges causes ovulation, ovulation होगा, और it results in the formation of corpus luteum also. Okay, जो corpus luteum बनता है. Estrogen का क्या function है? It thickens the endometrium wall. Okay, inhibits the FHS and LH for most of the cycle, उसको inhibit करेगा. ठीक है, stimulates the FSS and LH release pre-ovulation. Okay, इनिबिट भी करेगा और स्टिमुलेट भी करता है. सो इट इज मेंटेनिंग अ बैलेंस. प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन भी अगेन इट इज थिकनिंग द एंडोमेट्रियम वॉल एंड इनिबिटिंग द एफएचएस एंड एलएच. तो ये देखो, ये वाले चार्ट में यू कैन सी द हार्मोनल फ्लक्चुएशन व्हिच अकर्स इन अ फीमेल्स बॉडी. तो सी, ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन ऑल द हार्मोन्स लेवल आर लो. ठीक है, कम हो रहा है. ओव्यूलेशन के टाइम पे ये देखो, ओव्यूलेशन के टाइम पे ये कितना ज्यादा है. ठीक है, ओव्यूलेशन के टाइम पे सारे हार्मोन्स जो है वो पीक पे हो जाते हैं, और जब मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस होता है सारे हार्मोन्स का लेवल जो है एकदम ड्रास्टिकली कम हो जाता है. ठीक है. सो दिस फ्लक्चुएशन इन द हार्मोनल लेवल रिजल्ट्स इन लाइक मूड स्विंग्स. ठीक है, जैसे थोड़ा चिड़चिड़ापन होना, ये फीमेल में होता है कॉमनली मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे, क्योंकि ये देखो बहुत ड्रास्टिक चेंज हो रहा है हार्मोनल, स्पेशली एफएसएच एंड एलएच में तो हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे भी हो रहा है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन में. ओके, हार्मोन के साथ साथ ये देख लो मेंस्ट्रुअल फ्लो हो रहा है यहाँ पे. दिस इज द एंडोमेट्रियम वॉल विच इज ब्रेकिंग डाउन. प्रोलिफरेटिव स्पेस जो कि फॉलिकुलर स्पेस है, यहाँ पे ये थिकनिंग हो रहा है धीरे 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 धीरे. ओवुलेशन के टाइम पे यू कैन सी इट हैज बीन थिकनिंग, और फिर यहाँ से ये थिकनिंग होके फिर से यहाँ पे जाके ब्रेक डाउन हो जाएगा. ओके, और ये वाला भी देख लेते चार्ट. यहाँ पे देखो फॉलिकल जो है वो धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, प्राइमरी oocyte, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी oocyte, और उसके बाद ये ओवम जब बन गया तो ये रिलीज हो गया. ओके, ओव्यूलेशन वाला प्रोसेस. ऑलराइट, और यहाँ पे जो कॉर्पस ल्यूटम है वो डीजनरेट हो जाएगा. ओके, सो दीज आर द बेसिकली 4 phases in the menstruation, menstrual cycle. First, menstruation, follicular space, ovulation, and the luteal space. I hope it is clear. Okay. All right.
So that is it for today's session, students. I hope you have enjoyed the class. अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो देखा है तो प्लीज क्लिक द लाइक बटन एंड हिट द सब्सक्राइब बटन. ओके. एंड इफ यू वांट टू नो कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है, सो क्लिक ऑन द लिंक बिलो. ठीक है, उसको ज़रूर देखना. एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में एंड एसटीडीज के बारे में. Okay, so thank you all of you. Thank you for joining the class. Thank you for watching the video. Take care. Have a nice day, all of you.